वेलकम टू पेज ऑफ फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो सीरीज में लास्ट टाइम हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कॉन्सेप्ट से इजीली बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट यूजफुल वे टू मेजर द बाइंडिंग एनर्जी विच कैन बी गिवन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हम बाइंडिंग एनर्जी को डिनोट करते हैं EB से एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिनोटेड बाय EBN। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला EBN इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन। So this is the simple formula using which we can calculate binding energy per nucleon. So this will be the energy to remove single nucleon from the bound nucleus. Binding energy per nucleon is the average energy per nucleon to separate a nucleons into its individual nucleons. अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। So from this graph we can conclude that nuclei of mass less than 30 has lower binding energy per nucleon and nuclei which has mass greater than 170 has also lower binding energy per nucleon. And for mass range 30 to 170, binding energy per nucleon is almost constant, which is around 8.75 MeV. So these are the main features of the binding energy per nucleon, which we will see step by step. The graph of binding energy per nucleon versus atomic mass number, we can conclude following features. First feature is nucleus of mid mass number means 30 to 170 is independent of atomic number Z, which is almost constant. Okay, and maximum is about 8.75 MeV, which is for Fe56, and therefore Fe56 is the most abundant element of the universe. Okay. Second point is binding energy per nucleon is lower for lighter nuclei means for A less than 30 and heavier for A greater than 170. Third point can be concluded as heavy nucleus of mass number 240 has lower binding energy per nucleon compared to equals to 120. If we split this nucleus into 120 nucleus, these two nuclei will be tightly bound due to this बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे ये स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर फिशन में। एंड आवर फोर्थ टॉपिक फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन बी कंक्लूडेड एज टू लाइट न्यूक्लियई fused together and forms heavier nuclei of higher binding energy per nucleon. It means final system is tightly bound. Okay? हम ग्राफ से वो देख सकते हैं कि जब two light nuclei means A less than 10 fuse together and forms heavier nuclei, it will get tightly bound. ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है सन एंड स्टार्स में, जो कि है न्यूक्लियर फ्यूजन। So this is all about binding energy per nucleon concept.